Welcome to our Nagin Best Digital Learning channel. Today I am here with the second part of class 7th chapter 1 of computer science, which is computer software. So let us see server operating system. A server operating system is an operating system that is designed specially to support a network. A server operating system typically resides in a server. The client computer on the network relies on the server for resources. मीन्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्पेशली किस लिए डिज़ाइन हुआ है नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए. सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर कंप्यूटर के अंदर होता है जो कि क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स Windows Server, developed by Microsoft. Windows Server enables organization to manage applications and website on site and or on the cloud. Means Windows Server Microsoft ने डेवलप करा है और Windows Server ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन और वेबसाइट को मैनेज करने में हेल्प करती है जो कि साइट पे है या फिर क्लाउड पे है. OS X Server, developed by Apple. OS X Server enables organization to collaborate, share files, host website and mail servers and do much more on Mac computer and iOS devices. Means OS X Apple ने इन्वेंट करा है और ये सिर्फ Mac कंप्यूटर और iOS डिवाइसेस में रन करता है जिसके थ्रू यूज़र ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट कर सकता है, फाइल्स शेयर कर सकता है, वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. यूनिक्स, capable of handling high volume transaction of multi-user environment and works with multiprocessors. Unix is often used in web servers. Means Unix is used in basically the place where high transaction or high traffic is available. Means multi-user environment and works with multiprocessor और multi-core processors. यूनिक्स कहाँ ऑफन यूज होता है? वेब सर्वर्स पे. मीन्स जो सर्वर्स वेबसाइट्स को कंट्रोल करते हैं. जस्ट लाइक अमेजोन के सर्वर पे मल्टीपल यूज़र एक साथ अप्रोच करते हैं तो उस टाइप के सर्वर को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है? यूनिक्स. नाउ लिनक्स, because it provides a secure, stable, multi-user environment. Linux often is used on web servers and is supercomputers. Bharat Operating System Solution or BOS is an easy-to-use version of Linux developed by CDAC India. Means Linux एक सिक्योर और स्टेबल मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और लिनक्स बेसिकली वेब सर्वर, लिनक्स भी यूनिक्स की तरह वेब सर्वर्स पे यूज़ होता है और इसका एक एग्जांपल है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो कि इंडिया में डेवलप किया गया बाय CDAC. नेक्स्ट लेट अस सी द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल डिवाइसेस एंड मैनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस या टैबलेट्स में अवेलेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. दीज ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन द रोम चिप. मीन्स ये रोम चिप या फिर रीड ओनली मेमोरी उस चिप के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अवेलेबल होते हैं. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स और सपोर्ट कैलेंडर and contact management, text messaging, email, touchscreen, digital camera, media player, speech recognition, GPS navigation and a variety of third-party application, a browser and wireless connectivity such as cellular, Wi-Fi and Bluetooth. Means जो आपके मोबाइल डिवाइस के जो भी जितने भी बेसिक टास्क है, GPS, वाईफाई कनेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट, गूगल एंड्रॉयड. एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स
व्हाट इज़ ओपन सोर्स? ओपन सोर्स वो होता है जो कि अवेलेबल टू ऑल है, जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रामर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है और कोई भी प्रोग्रामर उसको इम्प्रूव कर सकता है. Android is an open source Linux based operating system designed by Google for smartphones and tablets. मीन्स एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल ने डिज़ाइन करा है. किसके लिए? स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए. फीचर्स यूनिक टू एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड गूगल प्ले ऐप स्टोर प्रोवाइड एक्सेस टू एप्स, गेम्स, सॉन्ग्स, बुक्स एंड मूवीज़. मीन्स प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर है, उससे हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, सॉन्ग, बुक या मूवी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट, गूगल ड्राइव प्रोवाइड एक्सेस टू ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, फोटोज, फाइल्स एंड मोर. मीन्स गूगल ड्राइव इज अ प्लेस वेयर ऑल द ईमेल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, फोटोज आर स्टोर्ड. Next, face recognition feature can unlock the device. This is a security feature which is provided by Google Android. Contacts and other information can be shared by touching two devices together or NFC technology. मीन्स NFC टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम दो एंड्रॉयड डिवाइस को आपस में अगर टच करें तो हम कॉन्टैक्ट्स को या फिर अदर इंफॉर्मेशन लाइक फोटोज और videos can be shared. Next is iPhone OS or iOS, originally called iPhone operating system, developed by Apple, is a mobile operating system specially made for Apple's mobile devices. Supported devices include iPhone, iPod Touch and iPad. Means iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने बनाया था और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल के द्वारा बनाए गए डिवाइसेस में सपोर्ट होता है, जस्ट लाइक आईफोन्स, आईपॉड टच एंड आईपैड्स. फीचर यूनिक टू iOS आर Siri, a voice recognition app, enables you to give verbal instructions or ask questions to which it can take actions or response with speech output. मीन्स सीरी एक वॉइस असिस्टेंट है, सेम एज गूगल असिस्टेंट. एंड्रॉइड्स में गूगल असिस्टेंट आने लग गया है अब. एप्पल के प्रोडक्ट्स में सीरी होता है जो कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस, हमारे वर्बल इंस्ट्रक्शंस को कैच करता है और टास्क परफॉर्म करता है जो कि हमारी वर्बल इंस्ट्रक्शन से हम देते हैं. iCloud enables you to sync mail, calendars, contacts and other items. Means through iCloud, same as Google Drive, we can store our contacts, mails and other informations. iTunes Store provide access to music, books, podcast, ringtones and movies. Means iTunes basically is a place where you can access to different music, movies, podcast and ringtones. Mac App Store provide access to additional apps and software updates. Means same as Google Play Store, iPhones have App Store where you can download or purchase any application or software. Next is Windows Phone. Windows Phone, developed by Microsoft, is an mobile operating system that runs on smartphones. मीन्स विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था जो कि उन्हीं डिवाइसेस पे अवेलेबल है विच आर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. फीचर्स यूनिक टू विंडोज मोबाइल्स आर sync photos, files and setting up Skype drive. Use your phone as remote control on your TV. Means we can through Windows OS we can use our smartphone as a remote control for our TVs. Nowadays it is also available for refrigerators, air conditioners and even for lights. Access to global catalog of music, videos or podcast or listen to music. Means through Windows operating system we have access to music, videos or podcast. Windows Phone
store, provide access to additional apps and software updates. Means basically all the three mobile operating system are similar, but have only difference is their manufacture. Other mobile operating system. Several other mobile operating systems exist, although they are not widely used as Android, iOS, and Windows Phone. For example, the BlackBerry operating system is a proprietary mobile operating system that runs on BlackBerry smartphones and BlackBerry tablets. Means ब्लैकबेरी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ब्लैकबेरी फ़ोन्स एंड टैबलेट्स में अवेलेबल है, बट ये इतना फेमस और वाइडली अवेलेबल नहीं है एज कम्पेयर टू द अबव थ्री. Firefox operating system is a Linux-based open source operating system that runs on smartphones and tablets developed by Mozilla. Means Firefox भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Mozilla ने डेवलप करा था. ये लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. Several phones also runs on version of Linux. Means Linux पे भी कई फ़ोन वर्क करते हैं जैसे Ubuntu. Now let us see the device driver. A device driver, also called a driver, is a small program that tells the operating system how to communicate with the device. Means through device driver, operating system has an access to communicate with device, means the system unit. It acts as a link between the hardware and the computer system and the hardware in the computer system and the operating system. Means the hardware which is available in the computer system, like your processor, your motherboard, device driver provides a link between the hardware and the operating system. The operating system relies on the device driver to communicate with each device on a computer. Each device on a computer, such as mouse, keyboards, etc., has its own specialized set of commands and thus required its own specific driver. Means keyboard, mouse, प्रिंटर एक्सेट्रा इन सब में इन सबको अपनी स्पेसिफिक कमांड्स रिक्वायर्ड होती है टू रन, और इसी वजह से इन सब के स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर होते हैं. When you boot a computer, means when you switch on a computer, the operating system loads each device driver. Means कंप्यूटर स्विच ऑन होते ही हर टाइप का जितने भी डिवाइस ड्राइवर उस सिस्टम से कनेक्टेड है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं. These devices will not function without their correct drivers. Means every device required their specific or correct driver to run. Next is utility program. Utility program is a type of software that performs a specific task, usually related to managing a computer, its device or its program. Means utility is basically type of असिस्टिंग और सपोर्टिव सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है, यूजुअली रिलेटेड टू कंप्यूटर और डिवाइस और प्रोग्राम. मीन्स कंप्यूटर को मैनेज करना, उसके अंदर जो डिवाइस कनेक्टेड है उसको मैनेज करना, और द प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी. मीन्स मैनेजिंग द कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेज एंड प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी. It helps the management of computer hardware and application software. Means utility software helps in management of hardware as well as the application software in a computer. Now let us see some examples. File management. It is a utility software that has a variety of functions like displaying a list of files on a storage medium, organizing files in folders, copying, renaming, deleting, moving and sorting files and folders, and creating shortcuts. Means फाइल मैनेजमेंट. फाइल आपके डिवाइसेस में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी एक एप्लीकेशन होती है फाइल मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइल्स जो आपके डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, वो सारी स्टोर होती है पर्टिकुलर फोल्डर्स में और इन स्पेसिफिक ऑर्डर, through which we can do copying, renaming and deleting. We can also move and sort the files on the basis of our requirement.
Next is virus scanner. It protects the computer against viruses by identifying and removing any computer virus found in a memory, on storage medium or in a incoming file. मीन्स वायरस स्कैनर हमारे कंप्यूटर को किससे प्रोटेक्ट करता है? वायरसेस से, ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे और उसके अंदर कोई करप्शन या फिर हैकिंग एक्टिविटीज़ ना परफॉर्म हो सके। वायरस स्कैनर कैसे वर्क करता है? जो अपकमिंग फाइल्स है, जो हम कंप्यूटर में कोई दूसरे कंप्यूटर से फाइल शेयर कर रहे हैं, उसको स्कैन करता है, या फिर ऑलरेडी अवेलेबल फाइल्स है उनको स्कैन करता है ताकि उनके अंदर कोई वायरस ना आ जाए। सम ऑफ द पॉपुलर वायरस स्कैनिंग प्रोग्राम्स आर McAfee virus scan or Norton antivirus. These two are the examples of antivirus which are available in the market. Next, last one is disk cleanup. It is a utility in a Windows that searches for and removes unnecessary files. Means disk cleanup means cleaning the unnecessary or unwanted files through your system. Unnecessary files may include downloaded programs, files, temporary internet files, deleting files and unused program files. Means disk cleanup क्या टास्क करता है? जो अननेसेसरी डाउनलोड हो चुकी है फाइल्स उनको क्लीन करता है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल को डिलीट करता है, और अनयूज्ड या फिर जो प्रोग्राम हमारे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं उन सबको क्लीन करता है। ये डिस्क क्लीनअप का काम होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software consists of programs designed to make user more productive and assist them with personal tasks. It allows user to create letter, memos, reports and other documents. Develop multimedia presentation, design web pages and diagrams, draw image, record and enhance audios and video clips, compose email messages and instant messages and do much more. Means application software, or in short apps. Apps are the programs that helps the user to increase the productivity and assist them with their personal task. मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लेटर क्रिएट कर सकते हैं, मेमोज क्रिएट, रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मीन्स एनिमेटेड प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, वी कैन ऑल्सो डिज़ाइन वेब पेजेस एंड डायग्राम्स, ड्रॉ इमेज, record and enhance audio and video, compose email means we can write email and also do instant messaging. To accomplish these and many more tasks, user work with application software. Application softwares are categorized into general purpose and specific purpose. General purpose. Many people have to perform similar kind of activities on a computer. For example, all the shopkeepers will need same software to compute their sales, inventory, storage and to maintain staff record. There are thousands of shopkeepers in the world. So a standard software can develop for the shopkeepers so that they can accomplish this general purpose task. मीन्स जनरल पर्पस। अब क्या समझ आया आपको इससे कि जिस तरह हमारे इसका एक एग्जांपल है कि शॉपकीपर्स हैं, उनको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके थ्रू वे अपनी सेल्स, इन्वेंट्री, स्टोरेज या फिर स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन रख सके। और वर्ल्ड में कितने सारे शॉपकीपर्स हैं, तो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन सब शॉपकीपर्स को इस टास्क में हेल्प मिले। अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर सकता है? MS Excel. In MS Excel we can create a spreadsheet so that the shopkeeper can make a record of their sales, inventory and other stuff. These software are available in CD-ROM or a DVD. One can purchase this software from relevant vendor in retail stores or on web.
Example of general purpose application software are word processor, spreadsheet, database, presentation, and paint और image editing software. मीन्स हम ये जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जनरल पर्पस, ये सीडी या डीवीडी की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और हम इनको किसी रेलेवेंट वेंडर या फिर ऑनलाइन वेब से परचेज कर सकते हैं. और इनके एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. Now let us understand each of them in more detail. The first one is word processing software. Word processing helps to create document using word processor. A word processor is just like a computerized typewriter. You use it to create or to edit the documents such as letter, reports, essay, etc. It has replaced the electronic typewriter in most offices as documents can be edited, searched, and reprinted with ease. Microsoft Word is commonly used word processor program. Means इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूजिंग वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटराइज टाइपराइटर की तरह होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट, एसे या फिर मेमो, इन सब को हम लिख सकते हैं. और ये इसने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स को मोस्ट ऑफिसेज में रिप्लेस कर दिया है क्योंकि हम इसमें इजीली एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और रीप्रिंट कर सकते हैं. और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. You can manage personal and business finance with the help of spreadsheet program. You can use a spreadsheet program to perform calculation, analyze data and present information. The most commonly used spreadsheet program is MS Excel. Means in MS Excel we can organize our data in the form of spreadsheet. Means basically organizing your data, doing calculation, analyze data and present information in the form of spreadsheet or in the form of tabular form में डाटा को रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. और द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज MS Excel. Next, database software. A database software is a collection of related information or records on any subject such as record of books in library, information about students in a school, etc. मीन्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अलग अलग कैटेगरी के डाटा या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बुक्स कितनी है हमारी लाइब्रेरी में, या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टूडेंट, उसका नाम, उसका पेरेंट्स का नेम, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इस सारे डाटा को हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को. Database software allows you to create, access and manage database. Means through database software we can create, access and manage any database. Most widely used database program is MS Access. Next, presentation software. Presentation software allows you to create document called presentations which are used to communicate ideas, messages and other information in a group. The presentation can be viewed as a slide known as slideshow. Means प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं. और इन प्रेजेंटेशन का यूज़ बेसिकली हम अपने आइडियाज़ को, मैसेज को या फिर अदर इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप को शो करने में यूज़ कर सकते हैं. मीन्स प्रेजेंटेशन का हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस में या फिर हमारी मीटिंग्स में, ताकि हम अपने आइडियाज़ को या अपने इंफॉर्मेशन को जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम पूरे ग्रुप को शो कर सकें. और इस प्रेजेंटेशन को शो करने को क्या कहते हैं हम, स्लाइड शो. हम प्रेजेंटेशन को स्लाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, स्लाइड शो. एंड इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है MS PowerPoint. The last one is print or image editing software. Paint and image editing software. Paint software
also called illustration software. What is the other name of paint software? Illustration. Illustrations means art software. It is an application that allows user to draw pictures, shapes and other graphics with various on-screen tools such as pen, brush, eyedropper and paint bucket. Means using these tools which are present on screen, we can create any type of arts or shape or graphic. Image editing software is an application that provides a facility of paint software and also includes capability to enhance and modify the existing photos and image. Means through image editing software we can do all the functions of paint software, but we can also enhance the capability and modify the photo. Modification can include adjusting or enhancing image color, adding special effects such as shadows and glow, creating animations and image stitching, means combining multiple image into large image. For example, collage. We can create collage using image editing software. Collage means adding two or more photos together in a single frame. Adobe Photoshop and GIMP is an commonly used image editing software, and an example of paint software is MS Paint. Now let us see the specific purpose software. The aboves are general purpose. Now specific purpose. Specific purpose application software is a type of software created to execute specific tasks. For example, a web browser. मीन्स जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर. और इनके एग्जांपल है वेब ब्राउज़र. A specific purpose of web browser is to show you the website and to facilitate you to surf internet. Means वेब ब्राउज़र का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि हमें वेबसाइट्स दिखाना और हमें फैसिलिटेट करना, हमें उकसाना कि हम इंटरनेट पर सर्च करें और चीज़ें. Sometimes the need of a business is to specific that there isn't any ready-made solution available in the market or on the internet. Means कभी कभार एक बिजनेस की ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है जिससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में पहले बना नहीं हुआ या फिर अवेलेबल नहीं है. So to get a specialized solution, a business firm has to get a specific software developed for its need. Means तो इसका सोल्यूशन के लिए बिजनेस फर्म्स, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज क्या करती हैं? अपने लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर दैट दे वर्क एग्जैक्टली एज वट वी वांट बिकॉज दीज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. मीन्स इन सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम करे, क्योंकि ये हमारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं. अब एग्जाम्पल्स आर नंबर 1 अकाउंटिंग मैनेजमेंट. अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज यूज टू मीट द नीड्स ऑफ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी बाय परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू जर्नल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल्स, परचेजिंग, इनवॉइसिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड पेरोल फंक्शंस. अकाउंट मैनेजमेंट हमें नाम से समझ आ रहा है, दिस इज़ अ फाइनेंसिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं. जर्नल लीजर, हमारा खर्चा कितना हुआ कंपनी का, कंपनी को कितनी पेमेंट रिसीव हुई, कितनी पेमेंट पे करनी है, क्या परचेजिंग हुई और क्या इनवॉइस आई, क्या बिल आए, जॉब की कितनी कॉस्टिंग हुई, या फिर पेरोल फंक्शन कि कितनी पेमेंट हमें पे करनी है या कितनी पेमेंट हमारे पास आई और गई. इस सारी टर्म्स, इस सारे डाटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होते हैं, उनको अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं. नेक्स्ट है रिजर्वेशन सिस्टम. अ रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑनलाइन बुकिंग. These booking can be for train, airplanes, hotel room, holiday package or any other type of such services. Means reservation software basically रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होते हैं? बुकिंग के लिए. जिस तरह आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है
तो आप उसके लिए क्या क्या रिजर्वेशन करोगे? पहले आप एयरप्लेन की रिजर्वेशन करोगे, फिर आप होटल की रिजर्वेशन करोगे, फिर आप कहीं घूमने के थीम पार्क की रिजर्वेशन करोगे। तो ये सारी रिजर्वेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। HR management. HR management software centrally manages employees' information such as their contact detail, employment status, benefits detail, complete dependent information, compensation, performance review, payroll, training, and much more. Means all these facilities are required to be monitored by an HR, and the software which the HRs use, HR are the managers of a company. The software which they use are HR management software. It also tracks and reports on attendance, worker compensation claim, injury, training, and to meet गवर्नमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मीन्स हम इसके थ्रू अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस वर्कर को कितना कंपनसेशन देना है, उसकी उनकी हेल्थ रिपोर्ट का रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का, या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का भी हम सारा रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अटेंडेंस सिस्टम. Attendance system is used by companies of all size to keep track of attendance primarily in order to pay their wages. This system also provides details such as arrival and departure of the employee, because some companies have a requirement to record the number of hours spent in specific tasks in order to calculate the cost of job accurately. This is referred to as job costing. मीन्स अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि हर टाइप की कंपनी, आइदर आपका स्कूल में भी अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर टीचर्स की आपकी तो अटेंडेंस शायद उस पर होती है रजिस्टर्स पे, बट टीचर्स की जो अटेंडेंस होती है बेसिकली उसका रिकॉर्ड होता है, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर सके। क्योंकि कुछ कंपनीज में या कुछ जगह ये रूल होता है कि जो एम्प्लॉय ने कितने घंटे उस कंपनी में काम करा, वो अपने चेक इन मतलब अंदर आने पे एक बार अटेंडेंस देगा, और जब कंपनी से बाहर जाएगा उसका काम पूरा होने पे या दिन ख़त्म होने पे, तब जब अटेंडेंस लगाएगा तो उसके बीच के टाइम पीरियड के हिसाब से उसको पेमेंट, उसकी सैलरी दी जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जॉब कॉस्टिंग। मीन्स पेइंग द वर्कर अकॉर्डिंग टू द हार्स दे स्पेंड on a task. Next, payroll system. Payroll software uses a computer to calculate the salary, bonus, commission, overtime, double time, etc. for each employee with accuracy by eliminating time consuming and error prone manual process. Means payroll system basically जो टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल प्रोसेस था कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना, उसके बोनस को, उसके कमीशन को या ओवर टाइम को मेज़र करना, ये सारी एक्टिविटीज़ को इजी करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। पेरोल सिस्टम इश्यूज अ प्रिंटेड पे स्लिप एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट पेड टू ईच एम्प्लॉय फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मीन्स पेरोल सिस्टम में हमें एक प्रिंटेड स्लिप मिलती है, जिस तरह एटीएम मशीन से हमें स्लिप मिलती है उसी टाइप की हमें स्लिप मिलती है पेरोल सिस्टम में, ताकि अकाउंट हमें रिकॉर्ड रह सके कि किसको कितनी पेमेंट गई और कब गई। द लास्ट वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर। मीन्स इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में हम हमारे स्टोर में या वेयर हाउस में क्या कितना मटेरियल अवेलेबल है उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री system is to keep a track of the items that are in stock. It also displays the item that has been sold and needed to be reordered to maintain the stock of the items in a store. Inventory system also evaluates which item is in demand in the market and needs to the most and which item is less demanded in the market. मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है कि जो उसका ओनर है, ओनर को ये बताना कि क्या स्टॉक ख़त्म है, क्या स्टॉक एक्सेस में पड़ा है और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है,
क्योंकि उस चीज़ का स्टॉक जल्दी जल्दी ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको क्या चीज़ ज़्यादा खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ कम खरीदनी चाहिए, इस सारे डाटा को जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बताता है उस टाइप को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, software suite. Software suite is a collection of individual application available together in a unit. Means multiple applications available in a unit is called a software suite. Productivity software suites typically include word processor, presentation, spreadsheet, and email applications. Means productivity means increasing the output rate. Means these types of software helps in increasing the productivity of the user. And these types of and the group of these software is called productivity software suite. Software suites offer three major advantages: low cost, ease of use, and integration. When you purchase a software suite, the suite usually costs significantly less than purchasing each application individually or as a standalone application. Software suite provides ease for use because of the applications in the suite normally use the consistent interference and share features such as clipart, spelling checker. Lastly, application is a software suite often often are integrated, which makes it easy to share information amongst them. For example, your email program can access your contact list to find recipients' email address. बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हम एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, जैसे हमें एम एस पेंट अलग ख़रीदा, हमने एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, इन सबको अलग अलग ख़रीदने की बजाय हम एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर सूट इकट्ठा खरीद सकते हैं. या फिर अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर सूट्स हैं, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर सूट्स होते हैं जिसके अंदर सेम टाइप के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि कम कॉस्ट करते हैं और हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे में इन कॉमन फीचर्स भी होते हैं. जैसे क्लिपआर्ट है, क्लिपआर्ट एम एस पेंट में भी होता है, एम एस वर्ड में भी होता है, एम एस पावर पॉइंट में भी होता है. तो ये फीचर्स भी हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं बजाय कि हम एक इंडिविजुअली अलग अलग सबको खरीदें. सो थैंक यू सो मच फॉर watching, and please do not forget to like, share and subscribe to our channel.